भले ही तुम बाहर कोई 30 मार खा लो, आके तुमको तो घर संभालना ही है. सो दैट थॉट वाज ऑलवेज देयर. मैडम की लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? I said I shall make myself strong to contribute to the women of the country. It was a culmination of a journey for me. आज की जो जनरेशन है, आजकल की जो लड़कियां हैं, डिमांड ही यहाँ से शुरू होती है कि मॉम डैड नहीं चाहिए, अगर है तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे. Generational way of working is completely different, and I have tried to be present and move with the generation. Even though when we talk about a liberalized India and we say that India is going through a very progressive phase, and there are so many things of progress that is happening in the country, women are still to an extent evaluated and judged on this aspect. सब लोग आके एक्सपीरियंस करके निकल जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग रह जाते हैं, एंड दे नो दैट whatever they have made their life in smart remains with them for a lifetime. पिक्टोग्राम चावडीच्या समस्त रसिक मायबाप प्रेक्षकांचं मी विकास गायधनी पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. मित्रांनो, आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने सुरुवात झालेला प्रवास पिक्टोग्राम चावडीचा आपण गेली 3 महिन्यापासून बघत आलोय, आणि ह्या 3 महिन्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम केलेले वेगवेगळे लोक आपल्या चावडीवरती येऊन गेलेत. सुरुवात अध्यात्मापासून असेल ती आता अगदी मागच्या एपिसोडपर्यंत, जिथे एक कर्तव्यदक्ष पोलीस आमदार पदापर्यंत कसा पोहोचला आणि त्यांनी शहादा कसं घडवलं, हा इथपर्यंतचा आपण प्रवास बघितला. परंतु तुम्हा सर्वांच्याच आग्रहाखातर आणि प्रत्येक वेळी तुमच्याकडनं कमेंट्समध्ये जो प्रतिसाद आम्हाला मिळत गेला की महिलांची एक बाजू प्रत्येक वेळी जी मांडली जाते की महिलांना अबला म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन जो समाजाचा आहे, याबद्दल तुम्ही बोलावं, याबद्दल काहीतरी करावं, हा जो प्रकार तुमच्याकडनं प्रत्येक वेळी आम्हाला सांगण्यात आला किंवा आमच्यापर्यंत ह्या माहिती पोहोचवण्यात आल्या, ह्याच गोष्टींना धरून खरं तर पिक्टोग्राम चावडीच्या सर्व टीमने एक विशेष सिरीज चालवण्याचा विचार केला होता, एक मानस केला होता. आणि त्या अनुषंगाने नवरात्रीला धरून, नवरात्रीमध्ये आपण 9 दिवसांच्या नवरात्रीमध्ये 9 देवींचं पूजन करत असतो, आणि ह्या 9 देवींचं पूजन करत असताना आपल्यामध्ये आपल्या सोबत असलेली आई असेल, बहीण असेल, मैत्रीण असेल, कोणी आपली मेंटॉर असेल, ह्या महिलाही नवदुर्गांपेक्षा कमी नाही आहेत. ह्या गोष्टींचा विचार करत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, प्रत्येक त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये कोणी असं उल्लेखनीय जर काम केलेलं असेल जे तुमच्यापर्यंत पोहोचावं असं आम्हाला वाटतंय, अशा विशेष 9 महिलांचा गौरव करण्याच्या हिशोबाने खरं तर आपण नवरात्र स्पेशल ही सिरीज सुरू करत आहोत. आणि सांगायला खूप आनंद होतोय, या सिरीजची सुरुवात ज्या महिलेपासून करतोय, खरं तर अम्मा म्हणून त्यांना म्हणत असतो मी नेहमी. आणि ह्या महिलेबद्दल जेव्हा मला बोलायचंय आणि जेव्हा मी अम्मा या शब्दाचा उल्लेख करतो, तुम्हा सर्वांच्या आग्रहाखातरच खरं तर मला मल्टिपल भाषांचा इथे वापर करायला आवडेल. मायबोली मराठीतून सुरू झालेला हा प्रवास पिक्टोग्राम चावडीचा, तिथे मराठी तर असणारच आहे, परंतु हा प्रवास फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता देशभर पसरावा म्हणून आपण आपली राष्ट्रभाषा हिंदीचाही वापर करणार आहोत. देशभरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती ह्या गोष्टी जाव्यात आणि चावडीची चर्चा जगभर पसरावी, या अनुषंगाने मराठी असेल, हिंदी असेल, इंग्लिश असेल, सगळ्याच भाषांमध्ये आपण खरं तर इथून पुढे बोलायला सुरू करत आहोत. आणि याची सुरुवात मला असं वाटतं की आपण नवरात्रीपासून केली पाहिजे. सो इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आज से विकास जब बात करेगा, पिक्टोग्राम चावडी का जो होस्ट बात करेगा, वो किसी दिन हिंदी में बात करे, कभी इंग्लिश में बात करे, कभी मराठी में बात करे, स्वीकार करिए. और हमेशा मेरे गुरु जो बोलते हैं कि ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट बाय टेलिंग द ट्रूथ, सच यही है कि मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ. कुछ गलतियाँ हो सकती है, गलतियों से सीखना चाहूँगा. सिखाने के लिए आप लोग बैठे हुए, जानते हुए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर कुछ गलतियाँ हो रही है, हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स में तारीफ ही ना करिए. कुछ अगर गलतियाँ हम लोग कर रहे तो उसके बारे में हमको बताइए कि हमने क्या और बेटर करना चाहिए. सो शुरू करते हैं हमारी ये श्रृंखला को लेके. नवरात्रि जब अपन बोलते हैं तो नवरात्रि मतलब 9 देवियों का 9 रूप. जब हम अगर अपने घर में अगर हमारी माँ को भी देखते हैं अपन, तो काम करते हुए वो खाना बना रही होती है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है. वही माँ जब ऑफिस में वर्किंग होती है तो बॉस की गालियाँ सुनो या कस्टमर की गालियाँ सुनो, ये सारा करते करते
फैमिली को लेके और काम को लेके दोनों को एक साथ सब मेंटेन करना, ये वो नव दुर्गाएं करती है। और हमेशा हमने यही देखा है कि औरत का एक ही रूप हमेशा हमारे सामने आया है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज की हमने शुरुआत की, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बोला। ट्रेनिंग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह जिनको बोला जाता है, अमिताभ बच्चन जिनको बोला जाता है, टाइगर संतोष नायर, उनको कौन नहीं जानता। बिकॉज जो बंदा ट्रेनिंग में है, जो बंदा सेल्स में है, जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप में है, उनके लिए भगवान है टाइगर संतोष नायर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर संतोष नायर बने कैसे? बिकॉज उनके पीछे भी एक हाथ था। हमेशा ये बोला जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वैसे ही ये कामयाब इंसान के पीछे, ये टाइगर संतोष नायर, इनके पीछे एक कामयाब औरत का उनकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ था। और उसी औरत को हम इनवाइट कर रहे हैं अपना पिक्टोग्राम चावड़ी पे, जहाँ पे नवरात्र स्पेशल सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इनके बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ, 3 बेटियों की माँ, लेकिन 300 से ज़्यादा बच्चों को आज संभाल रही है स्मार्ट के थ्रू। और हमेशा वही बोलती है कि मेरे ऑफिस में, मतलब स्मार्ट में जो बंदा आता है, स्मार्ट इज एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन कंपनी जिसको बोलते हैं हम लोग। बिकॉज स्मार्ट में उनके हाथों में जितने बच्चे आए, उनमें से ज़्यादातर बच्चे खुद के बिजनेस चला रहे हैं, और उसके पीछे जितना टाइगर संतोष नायर का हाथ है, उनका ही ये लड़ी का हाथ है। इनके बारे में ज़्यादा मैंने बताने से अच्छा है कि आपने उनको सुनना चाहिए। और मैं पिक्टोग्राम चावड़ी पे आमंत्रित करना चाहूँगा हम सबकी अम्मा, टाइगर संतोष नायर की बेटर हाफ, मिसेस सिंधु नायर को। हेलो मैम। नमस्कार, नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच फॉर आमंत्रित करने के लिए और ये एक मौका देने के लिए कि लोग मुझे देखे या मेरी स्टोरी को देखे। हालांकि मुझे मालूम नहीं वेदर इट इज़ समथिंग नाइस और व्हाट दे आर, आई एम गोइंग टू गिव देम व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. I just hope that they get inspired. That's my wish and that's my hope for all of them. तो चलते हैं, देखते हैं. एंड ये मेरा पहला पॉडकास्ट है. आई एम somebody who does not like to come in front of the screen. मुझे पीछे रह के, पीछे काम करके चुपचाप रहना पसंद है. और ये विकास ने इतना फोर्स किया है. एंड आई एम सो ग्लैड कि पिक्टोग्राम की चावड़ी प्रोग्राम में मैं मेरा पहला पॉडकास्ट कर रही हूँ. सो श्री गणेश यहाँ से कर रही हूँ. लोग इंशाल्लाह सोचे कि यार और आ जाए. सो लेट्स होप. बिल्कुल, और वैसे ही होगा. बिकॉज जैसे मैम मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ हमारे श्रोताओं को भी, हर कोई नारायण मूर्ति जी को जानता है. और जब सुधा मूर्ति जी ऑन कैमरा है, तब पता चला कि नारायण मूर्ति बने कैसे. ओ या, शी इज़ एन अमेजिंग लेडी. एंड मैं बोलना चाहूँगी, शी इज़ माई रोल मॉडल. And she's so inspiring. She's so simple. She's so humble. She's मतलब humility उसमें इतनी कूट के भरी है कि यार भगवान चाहे कि यार मैं उसकी जैसा बनूं. I always take a lot of lessons and she's my inspiration. And I'm so glad you referred her. Yeah. कि मुझे भी ये मौका मिला उनके बारे में बोलने के लिए कि काश मैं उनको एक दिन मिलूं. And I'll just give her a hug. And I'll just tell her that the way she conducts herself. And the way she's been silently there for him without being so intrusive and without being so pushy and wanting to make her position very clear, she's done it all and very silently, very subtly, and that's so inspiring. That's very very inspiring. बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां मैम आपको उनकी जगह पे देखते हैं. आप जो लोगों को आपकी स्टोरी मालूम है वहाँ से इंस्पायर हुए, लेकिन जो लोगों को नहीं मालूम कि सिंधु नायर क्या है, ये उनको बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं. मैं शुरू करना चाहूँगा अपने पहले सवाल से. सिंधु मैडम के लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? माई मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट, ओ माई गॉड. सी मेरे लाइफ में आई थिंक द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट वुड हैव बीन द टाइम दैट आई स्पेंट विथ माई फादर. He is somebody who was एकदम फ्लैम्बॉयंट था. एकदम not like the traditional conservative fathers जो होते हैं. He is somebody who just gave me that बिंदास hand कि भाई तेरे को क्या करना है तू कर. And he put me in some of the best schools. So what I saw, I studied in a convent school. और convent schools, it was a girls convent school. So वहाँ पे मैंने लड़कियाँ देखी. Those schools were run by sisters, mother,
वहाँ पे एक पैरिश होता था, वहाँ वो पैरिश चलाती थी एक औरत, जो बच्चों को छोड़ने आते थे वो भी मदर्स. सो आई जस्ट सॉ दैट you know, women are not the women that you generally see confined to the kitchen. They have a lot to contribute to society, and I just felt that someday maybe, वो टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं था क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, but I said I shall make myself strong to contribute to the women of the country. And that was the defining moment where I saw that the sisters, the teachers, the mothers, the parish people, the parents who came to leave the children, all were ladies. And that for me, that was a realization for me कि भाई ladies can do a lot of things. So for me, एक defining moment मैं नहीं बोल सकती हूँ, but it was a culmination of a journey for me. It started off as a very normal background, and then I just got into some. I don't know whether there is a defining per se moment, but it has been a journey, a very, 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 very transforming journey for me. So I would say that, yeah, that was a foundation. That foundation was very strong, and to add to it, getting married, having a mother-in-law as strong, who always gave me that confidence. So it was, my journey has been like that. So there was no defining moment, if I have to say. जैसे आपने अभी बोला कि मदर इन लॉ का आपने उल्लेख उनके बारे में बात की. आप मेरे ख्याल से 4 जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है. आपकी मदर इन लॉ है, आप खुद हो, आपकी बेटी और आपकी बेटे की बेटी. तो ये चारों जनरेशन को साथ में रहते हुए आपने खुद को इवॉल्व कैसे किया? एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि चारों जनरेशन का आधार स्तंभ डिफरेंट है. पहले जनरेशन में क्या था, लोग लेडीज़ को बाहर निकलना एक चैलेंज था. दे वर ऑलवेज इन द किचन, राइट. तो उनका लोगों को उनको देखने का नज़रिया अलग था. हालांकि उनको बाहर जाना था, उनको कुछ करना था, उनको चैलेंज था, अपने मन की बात को जाहिर करना. इट वॉज डिफ़िकल्ट. दैट वॉज वन फेज़. इन आवर फेज़ वी हैड द फ्रीडम टू गो आउट, क्योंकि हमारे हालात ऐसे थे कि हम जा सकते थे. बट द मेंटालिटी वॉज, यू आर स्टिल डिफाइंड और यू आर स्टिल मेजर्ड बाय व्हाट यू डू वंस यू कम बैक. कि भाई तुम कहाँ पे भी जाओ, लेकिन किचन में तो आना ही है, घर का काम तो संभालना ही है, बच्चों को तो संभालना ही है, उनकी पढ़ाई तो करनी ही है. सो दैट थॉट वाज ऑलवेज देयर. सो यू, भले ही तुम बाहर कोई 30 मार खान हो, आके तुमको तो घर संभालना ही है. सो टू बैलेंस दैट वाज डिफिकल्ट. तो वो एक एवोल्यूशन कि मैं बाहर काम करूँ, घर में काम करूँ, बच्चों को संभालूँ, and handling a partner who is exceptionally demanding, and to उनके नज़रों में खरा उतरना, क्योंकि उनके तो standards अफलातून है, it just touches the sky. That was for me a churning, that I had to fulfill the responsibility. और हमारा एक thinking है कि हम हर एक रूप में, हर एक हैट जो पहनते हैं ना, इफ यू वेयर द हैट ऑफ अ मदर, यू वेयर द हैट ऑफ अ डॉटर, यू वेयर द हैट ऑफ अ डॉटर इन लॉ, यू आर वेयरिंग द हैट ऑफ वाइफ, यू हैव टू बी, सब में खरा उतरना है. वो हमारी जिद है. और मेंटालिटी भी सोसाइटी की ऐसी है कि वो लोग चाहते हैं कि आप सब में खरा उतरे, एंड दे वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि भाई तू कहाँ पे गलत कर रही है. एंड देन यू से, अभी बोला ना ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए सर. तो वो एक एवोल्यूशन मैंने देखा बच्चों का. फॉर मी इट्स अ लर्निंग, आई ऑलवेज ट्राई एंड लर्न फ्रॉम देम, एंड आई ऑलवेज फील इनएडिक्वेट व्हेन आई talk to the generation, because I feel, oh my god, they are so fast growing, they know so many things, there is so much that I don't know. So that evolution of constantly be in the mode of learning and keep learning and keep evolving and upgrading and stay in touch, stay relevant, वो मेरे लिए बहुत important हो गया था. And now when I'm looking at the generation that is, the 4th generation that I'm seeing, I said, oh God, this is a generation of AI, and I'm technologically a handicapped person, भले ही हम लोग
आईफोन लेके घूमेंगे, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर अपना कंप्यूटर में डालेंगे, बट काम हम लोग लिमिटेड ही करेंगे. सो दैट रिमेन्स फॉर मी a challenge of balancing everything. But I think I've been blessed, and I've had a great environment and an ecosystem that supported me in whatever role I played. Like before marriage, it was my sister that supported me, and she understood me, and she still understands me. I mean, nobody can understand me the way she understands me. After marriage, it has been and it is my mother-in-law. She's been one lady whom I just want to be like. And then my children, I mean, they are so full of energy and josh, and they have so many ideas, and I feel, oh, ये idea मेरे को क्यों नहीं आया पहले? Because I think that यार मैं तेरी माँ हूँ ना, मुझे ये idea आना चाहिए था, but यार मेरे को ये idea आया नहीं. So I see that. So balancing it, see, Santosh comes from I think he comes from a generation which is different. My generation is different. My children's generation is, then there is Gen X, Gen Z, Millennial. There are all these generations. Abhi Alpha, Beta, वो सब आ रहा है. I don't know where is this going. So with each evolution, और हर एक evolution का एक phase होता है, 15 साल 16 साल का एक evolution होता है, वो एक generation होता है. वो एक generation में there is a lot of learning, and we have to be prepared to not get stuck and to be ready to unlearn that and to then learn the new thing and not be rigid. So वो एक, I think I have managed that pretty well, because हमारे ऑफिस में भी हर तरह के स्टाफ होते हैं. सो दे आर सम पीपल हु आर सीनियर्स हेडिंग द डिपार्टमेंट्स, some people who are mid managers, so they will be at their 30s, mid 30s. Right. Then there are people who are just interns, and they are so joshila, their way of working is different. So I feel that each of these generation has taught us, and the process of learning has to be on, and that's what's kept me going. जैसे आपने नाम लिया मिस्टर नायर का, जब बात सिंधु नायर की आती तो साथ में संतोष नायर स्मार्ट ये नाम आने ही आने हैं. और जब हम स्मार्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वैल्यूज़ की बात आती है. उन पे हम बाद में बात करेंगे. मैं जानना चाहूँगा सिंधु नायर जी की अपनी खुद की वैल्यूज़ क्या है जिनको वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है. Integrity has always been very, very close to me, and मैं लोगों को माफ़ नहीं करूं अगर वो मेरा इंटीग्रिटी, मेरा that's my personal value. My company may have a different set of values, but when it comes to me, when I'm the person who is taking a decision, I always try to find whether that person is somebody for whom that same value matters. So for me, integrity is extremely, extremely important. One. Secondly, I handled the entire operations. Of course, now it is taken over by the leaders and the president and the vice president and beautiful team of people that I have. Very, very committed and hardworking. But जब भी मैं handle कर रही थी, तो for me, a sense of togetherness was very important. So I always try to see whether, I can get everybody together. I can have people who are true to themselves, honest, are there with me. For me, these 2-3 things really mattered, and I am somebody who likes to create that masti. I create that sense of cheerfulness. I can just get onto the floor and वहाँ पे थोड़ा मैं धमाल मस्ती करूँगी. I have a hearty laugh, so I just laugh it off. Sense of cheerfulness has kept me going. क्या बात है. मैम, नायर साहब के बहुत सारे सीडी पूरी दुनिया सुनती है, जिसमें सबसे फेवरेट बहुत लोगों की जो है दिल से. दिल से में सर ने एक चीज़ के बारे में बात की थी, जहाँ पे ही वॉज सेइंग कि म्हाडा के घर में मैं रहता था. सिंधु का मतलब सिंधु के फादर के यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें होने के बावजूद सिंधु ने शादी के लिए हाँ की. मेरे घर में एंटर करूँ तो वो घर खत्म हो जाए. इसके बाद भी सिंधु नायर और संतोष नायर आज तक साथ में हैं, और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो रही है.
कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि आपको आपके डिसीजन पे डाउट हुआ कि ये मैं क्यों कर रहा Never, never, never ever. In fact, जब भी हमारी शादी हुई, and I want to tell you this, ours was a tailor-made wedding. हमारी ऑडियंस ये सुनना चाहेगी क्या किस्सा है? स्टोरी तो बहुत लंबा है, लेकिन इन शॉर्ट एक ही सेंटेंस में अगर मुझे बोलना है तो आज इज अ टेलर मेड वेडिंग. उनके डैड का टेलर और मेरे डैड का टेलर एक ही है. सो आई ऑलवेज फील दैट इट वॉज कस्टमाइज्ड बाय गॉड. आई डोंट नो व्हाट. टेलर ने बनाई जोड़ी. टेलर ने बनाई जोड़ी. एक्चुअली हम लोग की टेलर, आई मीन हमारे डैड्स के टेलर एक ही थे. And he was responsible to get us married. But yeah, when I came from a comfortable background, Santosh had to struggle a lot, to get that comfort for his family. But when I got married, I came from a 2-bedroom hall, 6th floor, great apartment, huge colony, bada campus and all that. And then when I got married, I came to a house which was around I think 230 square feet, and उनका garden था, बहुत beautiful था. The garden was bigger than the house. So when I entered the house, I just saw that ये खत्म हो गया. I said, "Oops, where did my dad get me married?" But I think that was just a fraction or a part of a fraction of a thinking that I had, because what attracted me was the people. My in-laws. They had a big heart. I mean, they still have a big heart. And they welcomed me with so much of warmth. I didn't feel I missed anything. So I think it's people, and that's why for me, in any organization, people are important. You need to create that warmth, that sense of belongingness, the cheer. You should be able to accept the new. And take the new along with the old, the balance जो लाना है, the acceptability जो लानी है, जो comfort देना है, जो compassion देना है, that's very important. For me, empathy, compassion, these are things which values जब भी हम बोले, these are very important to me, because I always try and think from the other person's shoes. I always try, which is not right. When you're driving a business, you always should think about what's right for the company, which I think, but I always come back to, yeah, let's be fair. Let's be fair, and let's get into a deal, get into a collaboration, get into a partnership, even if it's an employer-employee partnership or an association. हम लोग, let's be fair for all. For me, I always do that. So, like you said, आपको कभी I don't think so. I did go back to my father, because हमारे टाइम पे ऐसा ज़माना था कि शादी के पहले ना हस्बैंड के घर नहीं जा सकते. So हमको तो घर मैंने तो देखा ही नहीं. So I trusted my dad, and I entered. तो वो लोग बोलते हैं ना, राइट लेग लेके अंदर आ जाइए. तो मैं राइट लेग लेके अंदर गई, वो दिया भगवान के उधर रखा, and then I said, अच्छा घर खत्म हो गया. But it was full of people brimming with joy. I mean, I had the best of mother-in-law. So for me, she's like there. मैंने हमेशा आपको जब बात करते हुए सुना है, आप जब बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करती हो आप नॉर्मल होते हो, जब उनके बारे में बात करते हो वो ग्लो ही अलग होता है. Yeah. She's been the strength. I mean, she's somebody who said, and I think I got it from her, because businesses में ups and downs होते रहते हैं. हम लोगों को कभी कभी लगता है यार हो पाएगा, ये महीना हम चला लेंगे, ये क्वार्टर हम देख पाएंगे, हम इन लोगों को, हमारी जितने भी स्ट्रैटेजिक प्लान्स हम लोगों ने बनाए हैं वो प्लान्स हम लोग अमल करेंगे. वेदर कैन वी डू इट. हमारा जो ब्रांड है, स्मार्ट हैज अ ब्रांड विच इज, we were pioneers, and we are pioneers of the training industry, and the entrepreneur training industry, and people feel that y'all are this huge. That's why I said Smart is entrepreneur production company. Yeah. और बहुत प्राउडफुली ये चीज बोलना चाहूंगा कि मैं उसका you are a part of it. You've seen how it is. We've had great people. You are a part of it. Vijaya is a part of it. Shwetali is a part of it. We have so many success stories internally in Smart, and we are so proud.
हम लोगों का बिग हैरी ऑडिशियस गोल में हम सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, एंड दैट हैज केप्ट मी गोइंग, यू नो. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय मदर इन लॉ, आई लाइक टू टेल, यू नो, व्हेनेवर वी हैड दिस अप्स एंड डाउन्स, डाउट होती थी, तो हम घर में बैठ के, यू नो, हम लोग बोलते थे कि, यू नो, अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. एंड शी वाज सो काम, शी वाज सो काम, so cool. She never had that doubt in us. उनको इतना कॉन्फिडेंस था हमारे पे. Then I said, यार, where are we? You know, why are we feeling this? And it used to be just one conversation in, like, you know, 2 months, and that would keep us going for the next year. And she would say very few words, but the way in which she said that, the confidence that she had, and she always didn't she said, इतना हुआ भगवान की दया से, तुम लोगों की मेहनत से, संतोष के टैलेंट से, तुम्हारा हार्डवर्क से, जो बैक ऑफ द स्क्रीन है, हम लोग सब हैं. यू नो, दैट स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, जो आज की जनरेशन में आई फील इज लेस. देर इज, दे स्टे टुगेदर, they are still detached. They stay together, they are still isolated. They stay together, there is no communication. So, you know, that togetherness जो उन्होंने बांध के रखा है फैमिली को, I wish I'm able to do that. I learn from her every day. यू नो, मेरा अगला सवाल आपको वही था कि 90s के एरा के जो लोग थे, यू नो, आज मतलब आज भी आप आपके मदर इन लॉ को लेके इतना हम्बली और इतना प्राउडफुली बात करते हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है, आजकल की जो लड़कियां हैं, डिमांड ही यहाँ से शुरू होती है कि यू नो मॉम डैड नहीं चाहिए, अगर है तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे. ये जनरेशन को आप कुछ कहना चाहोगे? See, I have 3 daughters, 3 beautiful, I'm blessed with 3 beautiful daughters, very independent, successful, hardworking. They've seen what we've gone through, and had I a son, if I had a son, I would have told him, bhai, you stay separately, keep that love. Not because I won't be able to handle the daughter-in-law. I want to give space to the couple, their thoughts. वो कुछ पहन के आई, I may not like. Not that I don't. I'm quite cool that way. You know that. Yeah, I am. You know, I can be cool with their friends, and I can be as masti bara with them. But I don't. For me, it's not important कि भाई तुम लोग साथ में रहो और बात न करो, और वो रिश्ता निभाने के लिए निभाओ. यू नो, वो मुंह में, यू नो, यू आर अपसेट, योर एक्सप्रेशंस आर नॉट दैट, यू आर नॉट हैप्पी बीइंग हियर. आई वुडंट वांट दैट. आई वुड वांट यू टू बी सेपरेट. भले ही नेक्स्ट फ्लैट हो, नेक्स्ट घर हो, यू नो, तुम बाजू में रहो. जब भी मन किया आप लोग आ जाओ, खाना भी साथ में खाएंगे, सब कुछ साथ में करेंगे, बट यू हैव योर स्पेस. डिमांड करना, इफ दे हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, देन आई थिंक वाजिब है. कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, बिकॉज आई फील कम्युनिकेशन हैज़ गॉट ग्रेट, देयर इज नो बाउंड्री फॉर कम्युनिकेशन. You can be, you can still keep communicating and resolve a lot of issues. हम लोगों को अलग रह के फ़ोन भी नहीं करे, क्योंकि साथ में रह के भी, यू नो, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन ईच अदर्स लाइफ. राइट. सो भाई, जब भी अलग रह के मिलते हैं ना, तो बहुत बात करने रहती है, बात करने के लिए बहुत कुछ रहता है. यू नो, यू सिट एंड कनेक्ट ऑन सो मेनी मैटर्स, घर का, बच्चों का, स्कूल का, ऑफिस का टेंशन, यू नो दैट. So there is a lot of conversation that happen, और ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते हैं, और वो रिस्पेक्ट भी मेंटेन होता है. कभी कभी, यू नो, साथ में रहने के टाइम पे, यू नो, यू लूज द रिस्पेक्ट. फिर वो क्या है, वो सास है, वो ससुर है, तो रिस्पेक्ट करना पड़ता है. तो वो एक फोर्स्ड स्पेस से जब वो लोग ऑपरेट करते हैं ना, वो नकलीपन दिख जाता है. आई वुडंट से दैट. I would still want people to be together. See, today I stay with my mother-in-law. I and Santosh stay with her. She's part of our. She's actually the main part of our being, you know.
So she's the one who keeps everybody together. So हमारे घर में लोग आते जाते रहते थे, बच्चे लोग आते, daughter आती है, granddaughter आते हैं, son-in-law आता है. People are all the time coming. They keep her happy. She's happy. We are happy. That was another era that we have. आज के ज़माने में I would still like people to come, go, do मस्ती, stay, you know, कहीं भी पड़े रहो, make space for yourself and be feel at home. खाना बनाना है, बना लो, मेरे को बनाना है, मैं बना के देती हूँ. So it used to be, you know, the next generation is a little यार फोन करके आना. तो बहुत बार सुना है, फोन बार करके आना, जब मैं आऊँगी कभी भी आ जाओ, लेकिन हम लोग क्या है ना, बाहर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फोन करके. फिर वो झिझक रहती है, अरे यार उतना फ्रीडम से हम लोग नहीं घुस पाते ना. That is not there. Like I can see that with, you know, with my children's friends. They'll come, they'll go, they'll stay over, they'll walk in shorts, you know, in the room. We'll be taking a cup of coffee to my room. So there is a lot of we have evolved to that level. ये चीज़ें you know, being staff of smart, मैंने ये चीज़ें हमारे बारे में बहुत बार देखी है कि स्मार्ट मतलब स्मार्ट छोड़ो, आदित्य अपार्टमेंट के डोर्स हमेशा हमारे लिए भी खुले हैं. बहुत भले ही वो लोग वहाँ आना नहीं चाहते हैं because you know they have to face the chairman, but he has a different roop, you know, when he's off stage. That's not what every people. I mean, he's a great host. वो भी देखा है. Yeah. Then not everyone has seen him that way. I have a great team. You know, स्मार्ट में जितने भी लीडर्स हैं, जो भी स्मार्ट को टच होके गुजरा है, have all been fantastic, and they've all grown to be having independent businesses. I mean, you're a prime example because I'm so blessed. And हम लोग बोलते हैं ना, आप स्मार्ट को भले छोड़ दो, लेकिन स्मार्ट आपसे कभी नहीं छूटता. कभी नहीं छूटेगा. You know, इतनी सारी बातें जब हम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे प्राउडेस्ट मोमेंट होंगे आई नो शेयर करने के लिए. या उनमें से कुछ एक हम सुनना चाहेंगे. Proudest moment, I'll give you two. Okay, I'll split it up. I'll give it from a boss point of view, a proud moment that I had, and from a customer perspective, you know, a proud moment. हमारा ना, हम लोग केरला लॉन्च कर रहे थे एज अ मार्केट, एंड वी हैड अ स्टॉलवर्ट फ्रॉम अ कंपनी गोइंग देयर. अभी उनके साथ जाने के लिए दे वांटेड समबडी हु नोज टू स्पीक मलयालम, एंड हमारे कंपनी में कोई भी नहीं था हु कुड स्पीक मलयालम अदर देन मी एंड संतोष ऑफ कोर्स. बट मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी अश्वती नायर. हाँ, शी कुड स्पीक मलयालम. And she came from a pure operational background. And I said, यार अश्वती तेरे को ना केरला जाना पड़ेगा. तो she said, यार कभी कहाँ पे कितना टाइम क्या है. I said, जितना भी टाइम वो मार्केट को बिल्ड करने को लगेगा ना, तेरे को जाना पड़ेगा. And you have to reach there tomorrow. So she was already in Smart for some time. She had seen the way we work. We are a very dynamic, ever evolving, ever churning, you know, company. Minutes बड़े, second में, you know, decision change. Yes. So we are very well paced with that. So then she said, okay, I'll go. मेरे को क्या करना पड़ेगा? And I said, you have to build the market with this ma'am who's coming with you. And we had Lakshmi going there. Yeah. And she took it on head on. And I was so happy that girl got to see a different side of her capability. And we could tap that capability. And she grabbed that opportunity. For me, that was a very defining moment. And she's just one instance. I have Shwetali who was somebody who was so confined in her house and her circumstances and society and upbringing and all. बाहर जा नहीं पाए. Then I had to speak to her mother and I said, she's in safe hands. You know, by you not sending her, you're not allowing her to develop into somebody big. तो वो आप हमारे पे छोड़ दो हम. And she grew. I mean, she's today driving her own beautiful setup. Yes. You know, as far as customers are concerned, I remember I was reviewing this company called Wallplast.
They are a very huge group right now. But this I'm talking around 10 years plus back. Uh, they were a 40, 45, 48 crore company at that time. 45. And I was doing their vision exercise, you know. So I was sitting with Ashok Mehta and Kaushal Mehta and we were debating on आपका vision क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, आप बोलो. So father and son were getting into this. So we fixed a vision for them when we said that, you know, they said that हम लोग 100 crore. Then they saw my face. They said, अच्छा 200 crore तक in the next, you know, 10 years. I debated with them. We stretched it to 500 that day evening. I had a 2-day session with them. I went back home because I was so unhappy with myself because I knew the potential they had. And I said, nahi, how did I come back? I called them up in the night and I said, कल का जो session हम start करेंगे, we will review what we did. I'm not happy. I forced him. We did it at 2000 and he said नहीं हम नहीं कर पाएंगे हम ये this is you know this is a recipe for disaster हम नहीं कर पाएंगे फिर आप review करने आओगे फिर आप बोलोगे ये क्यों नहीं हुआ and all that. I said नहीं हम लोग 1000 तक आपको लेके जाएंगे. And today they are crossed multiples of that. Yeah. And in each platform that he stands and he says that is that lady who made me राइट और जब लिखने के टाइम पे मेरे को जो कन्विक्शन नहीं था वो लिखाने के टाइम पे उनको कन्विक्शन था वो कन्विक्शन को मैं सलाम ठोकता हूँ सो फॉर दैट सो यू नो व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी डू द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी ब्रिंग इन ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स द वे इन विच वी हैव टूल्स टेक्निक्स प्रोसेसेस जो हम बात करते हैं कंपनीज पे जाने के टाइम पे कि हम ये करके रखेंगे ये आप करके देंगे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे हम आपकी मेंटरिंग करेंगे हम सिस्टम एंड प्रोसेस डालेंगे सो वो टाइम पे यू नो द वे दे सरेंडर टू अस एंड वी आर इन अ पोजिशन टू ट्रांसफॉर्म सो ट्रांसफॉर्मेशन सी आई विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म देम इफ आई डिड नॉट have that capability and ability in me to be well upgraded. I cannot just for preparedness for me is very important. तो मैं prepare करती हूँ बहुत, you know, and then I go there and then I tell them that this is what you can do, this is how you can do, and then they say हाँ हम कर सकते हैं. They document it. फिर वो पत्थर की लकीर बन गई. फिर तो उसको करना ही है क्योंकि हम जाके पूछ लेंगे उनको. Right. So that was a customer's angle of, you know, that wow moment and that actually made me realize, yeah, I handled 2 generations when I was sitting with both of them, got them onto a platform where, you know, we could document something and live that and make it happen. And I'm so glad that, you know, we were a small part, we were a small catalyst in their huge journey, and they were there for so many years before that, and they just could grow till 48 and then they grew exponential. That exponential growth जब मैं देखती हूँ लोगों को, each success story of employees जो हमको छोड़ के कुछ स्टार्ट किया या हमारे से छोड़ के कुछ निकलने के टाइम पे हम बहुत अपसेट होते हैं एंड यू नो आई कैरी दैट वेट एट होम because I'm there in the business on the floor dealing with people and nikalte hai na then I'm upset, you know, and I always sit and chat with my mother-in-law and I talk to her and I tell her wo nikal gaya ye nikal gayi, and then she only tells me one thing and that has stayed with me forever. She said nikalne ke baad has he gone to a better position, better salary, better designation, बिगर यहाँ से छोड़ के वो कुछ बड़ा ही हो गया है ना. सो यू हैव डन गुड. आई नेवर लुक्ड एट इट दैट वे. आई ऑलवेज सेड अरे यार वो निकल गया अभी ना कौन आएगा उसके प्लेस में, अभी हमको कितना टाइम लगेगा बनाने को. So I always looked at it like that, but she had such a broad view of the person who left me and I didn't think of it that time. So whenever now people leave, so we always say that he's in a better place and he will always thank you. He will always have that sense of gratitude. And she always told me that he will have that gratitude. You're sure of that, no? लोगों को हम बना सकते हैं ना. I said, yeah.
I didn't look at it in that person. So that जो mindset shift जो हम लाते हैं लोगों को, I think somewhere when I see her, no, when I see her talking, when I see her of how her approach is to anything that happens, कुछ भी होता है ना, her approach is so different, so calm, so broad-minded, you know, and she's just a housewife. She's not seen the outside world. एंड लोग बोलते हैं कि हाउसवाइफ क्या करती है. Yeah, I learn. I'm telling you because I learn every morning. I learned from her something day before yesterday in the evening when she was talking about children and she said हम तो स्कूल में ना लोटा में पानी लेके हम लोग स्कूल में चल के जाते थे. अभी तो बच्चों को पिकअप करने को वो लोग गाड़ी ड्राइवर के साथ बेचते. अपना भी गाड़ी, हमारे टाइम पे तो अपना गाड़ी हम लोग को लेके चलना पड़ता था. या not that I did it, even my children were even they came from whatever background, we were very sure भाई तू बस में जा, तेरे को बस के पैसे मिलेंगे, तू रिक्शा पकड़ेगी नहीं, तेरे को चल के ही आना पड़ेगा या बस में आना पड़ेगा. So we were rigid, but now the times have changed. And so when she was telling that, I said so much she knows. She's hardly steps out of the 83, 84 years, but her knowledge is so great. क्या बात है. मतलब अगला सवाल मैं आपको जो पूछने जा रहा हूँ, शायद मुझे आप और आपके साथ साथ उनका भी आंसर मिल जाए कि आप अगर लेगेसी छोड़ने की बात करें तो उसको 3 कौन से वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे? Inspiration is definitely one. Cheerfulness for me is very important because I like to work with people who are cheerful. In fact वो मेरा जब भी recruitment, मेरे टीम का recruitment जब भी होता है ना, I always say यार get me somebody who's bubbly, excited, enthusiastic and cheerful. I like to work with such kind of people and the ability to empower. 3 words कम पड़ेगा यार, बहुत कम पड़ेगा. Compassionate है. Because that's a legacy that I would leave. I don't know, I think I should ask my children. They will come out with what अतरंगी reasons. वो बोलेंगे यार इसका legacy हम लोग को बोलो, इसको मत पूछो. हम लोग बताते हैं. She's just I don't know, I've heard this from people that you're very chilled out, very relaxed, you're very calm. And I think I have seen so much of storm because so much of ups and downs, and I've still faced it with a lot of cheerfulness. So yeah, I think. आपके चारों जनरेशन के बारे में हमने बात की. आप घर पे कैसे हो, फैमिली के साथ कैसे हो, ये हमने हमारे ऑडियंस ने भी जाना. मैं आपकी अदर साइड जानना चाहूँगा, जहाँ पे जनरेशनल गैप आप काम के हिसाब से उसको ब्रिज कैसे बनाते हो, मतलब कैसे बनते हो, अगर यही ऑफिस के बारे में अगर बात करूँ. Oh, there is a lot of generational gap. झगड़े होते हैं कभी कभी, इतना बड़ा झगड़ा होता है because मेरा sense of understanding is slow, I would say. Santosh's sense of understanding, I mean, he comes from another, I won't say he comes from another generation, yeah, but जब भी हम लोग millennials बोलते हैं, Gen X बोलते हैं, baby boomers बोलते हैं, Gen Y बोलते हैं, सब they are different generations, alpha, beta, whatever now. But he comes from a different space of thought. Unka way of thinking, because he thinks of it more from a business, revenue, service to customer, that point of view. My thinking is more inward, operationally how it will function. Does it meet our requirement? Is it there on the strategy? Are we following the process? So process का उल्लंघन तो वही करता है, जो बनाते हैं वही करते हैं. तो entrepreneur बनाता है, entrepreneur ही उल्लंघन कर लेता है. So I see that. लेकिन see, many times I agree to whatever is that, to buy peace na, I agree sometimes. Sometimes I fight it out like crazy. बहुत झगड़े होते हैं, board room झगड़ा होता है. Sometimes I agree to disagree, and I will tell I don't agree with this, and I will, to close the topic, I agree to disagree on this point. Period. Let's get on to the next thing. So for me it has always been I try to look at the other person's perspective, और फिर मैं सोचती हूँ हाँ भाई ये जो बोला है सही बोला है. Many of the times I am in a spot कि यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, and I learn so much from that generation. वो जो लेके आते हैं, and I see they are 25-year-old, 30-year-old,
and they come out with brilliant ideas, and I applaud them, I appreciate them. We may even give them some reward or an incentive, bhai chocolate le le, ye le le, let's go out for lunch, something like that. But generational way of working is completely different, and I have tried to be present and move with the generation. It's been difficult to move with the generation क्योंकि I always feel inadequate, like मैंने पहले बोला ना कि मुझे लगता है यार ठीक है, मेरे में है कुछ, मैं कुछ कर पा सकती हूँ, मैं कुछ I bring something on the table. For me that is very important because हमारे जनरेशन में मैम फिल्म्स बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर रोल प्ले किया करती थी। कोई भी अच्छी चीज़ें हो, कोई भी बुरी चीज़ें हो, हम फिल्म से बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते थे। फिल्मों से एक चीज़ जो बहुत बार दिखाई गई है, एक औरत दूसरी औरत की हमेशा दुश्मन दिखाई गई है, बहुत बार। मैं इसी चीज़ को लेके क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, औरत को अगर औरत को बेटर वे में सपोर्ट करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं? I think they have to accept the other person as is. See, most of the time we try and see that यार ये मैंने सोचा, ये वो भी कर सकती थी ना, मुझे ही हमेशा क्यों करना पड़ता है. But sometimes that is the way they are. I mean, and then you make up for that gap. So I never got into. In fact, I'm somebody who always proudly say that hire women in all positions in smart. I will always say, hire women. In fact, because you remember, we had all the key departments headed by women. Yes. All the departments, operations, finance, not finance, but yes, operations definitely, service definitely, sales, strategy, everything. All positions were, even our franchisee, we empowered women so much. We were in a position to work together and bring harmony and create that harmony. I'm not saying it was very smooth going. There were a lot of ups and downs, but I have just accepted women as they. I have not tried to change them. हम लोग बोलते ना, let's work on your strength. So I've played to the strength. And the other thing is, I've been very rooted in. I may be open to change and do a lot of things differently, but I've stayed rooted in my value system. My value system was not something that I create a fight. Maybe my upbringing has been that way. I'll contribute a lot of it to the way my dad brought me up, because he was extremely broad-minded. He used to speak a lot about things that are happening in the world, and the kind of people that they are there out in the world. And he was very sure that तुमको तो काम ही करना है ना, तुमको तो लोगों के साथ काम करना है, वहाँ पे औरतें होंगी, एंड जो जनरली होते हैं ना, झगड़ालू होते हैं, होते ही हैं. एंड आई थिंक बिकॉज आई वॉज इन अ स्कूल विच हैड ओनली गर्ल्स, उसमें भी बहुत सारे, दे केम फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, so it was I think I saw a lot of it there. So the 7-8 years that I was in that convent school, that helped me to make it easier for me to deal with women. And then my own belief that women are any day more powerful, any day more contributory, any day somebody who can multitask and can carry on the burden of their home and the work with great josh, and never a dull moment for them. They may be upset, they may be challenged, but they may have 15,000 jobs on their hand. You give them one more, it is easily done. As compared to anybody, not that I am anything against men, I love them. I feel that they carry a huge burden, and I feel that we are always trying to pull them down. That's not the way. They have great things to meet. They are not people who can emote well. हम तो छाती भी ठोक सकते हैं ना, छाती ठोक के क्रिएट हाय हू करके हम लोग अटेंशन सीख करते हैं. They cannot do that. So I feel that way. We have always said, okay, what's your strength? Let's play to that. What's my strength? Let's play to that. And harmony में निकल जाते हैं.
So I've seen everybody with no exception, all the women that worked with us currently and in Smart who's currently there and वो जो Smart से निकल भी गए हैं ना, I've seen them, you know, still keeping in touch, still connected with us. So I don't think I've been bad. I've done a bad job there. I've been in a position to balance it out. Yeah. यू नो हमेशा हमने यही सुना है कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट यू नो आज के वर्किंग वुमेन एरा में मर्दों ने भी औरतों को उतनी ही साथ दी है, उतना ही की रोल प्ले किया है। यू नो कुछ कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, आज भी कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे चलते कि नहीं यू नो मर्द ही सब करेगा, औरत कुछ नहीं करेगी। ऐसे लोगों को मतलब ऐसे अगर मर्दों से हमें बात करनी है तो उनको हम क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मर्द लोगों को सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए औरतों को, वन, बट इट शुड नॉट बी दैट मर्द ऑफिस में काम करता है और घर में आके काम करता है और वाइफ बाहर जाती नहीं है। वाइफ को भी उतना ही मेहनत अगर कर रही है तो मर्द को सपोर्ट करना चाहिए। लाइक यू नो आई वाज रीडिंग दिस, नॉट रीडिंग, आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट और वीडियो ऑफ एन इंटरव्यू ऑफ सुधा मूर्ति, and she was telling all the mothers who were present there, she said, please teach your son how to cook and how to, you know, handle kitchen affairs. Yeah. Because it's very important, because you know he will be supporting the wife in his truest form when the wife is also going out, and you know, so I didn't probably get that kind of luck, I would say. But I got luck in different other forms, so that compensated of course. But आज की generation के लिए it's very important that the man helps the woman, and the man and the woman is equally working day in day out, hard working for the family, for their future, and very very focused on their careers, क्योंकि careers important है। हम लोग बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं, obviously we don't want them to be not doing anything. But they also should have a partner and a companion, married or not. I will reserve my points because I don't believe that they have to be married for them. They can be companions, staying together, whatever. But they need to be supporting their wife in every way. In fact, also trying to sit with the wife and asking, how was your day today? The basic requirement actually. Yeah, it's a more than the physical work, na. See, because what is happening is, you know, आज की तारीख में ना, there is a lot of mental, emotional imbalance जो होते हैं। जितना हमारे टाइम पे हमारा जो सक्षम था, हम जो you know कंट्रोल कर सकते थे, हम जो we were very resilient, strong. The degree of that has come down. You know, so people find it small change in their way, in their daily routine. थोड़ा कुछ हिल गया ना, they are not in a position to handle how to cope with it. So I feel it is very important for the partner, whoever the partner is, a girl, guy. I mean, today we talk about bisexual, homosexual, gay, the LGBT community, and there is a huge acceptance to it, and I'm so glad, you know, because people find equation with different people, and the other person has to sit and sometimes, how do you feel? How was your day? It's a very simple question, but that question really makes the other person feeling so equipped that, you know, they are having somebody to share their life with. जो हमारे ज़माने में तो उतना वो क्या है, व्हाट इज दिस, तेरा दिन ठीक है ना, तो घर काम पे गई थी ना, ठीक ही होगा. They don't get into the details of, they may get into the details of the work, but they may forget to find out how are you feeling, what are you feeling, how are you feeling. The feel जो है, which is more internal, that gives strength, no, to the person. That's very important. आज के जनरेशन में लोग यू नो मैम जब रील्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, रील्स में भी बहुत सारे यू नो ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि यू नो
लड़की क्या चाहती है कि शाम को तुम पूछो कि हाउ वाज योर डे। आई से आज शाम को जब हमारा ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे, 100 में से 2 बंदों ने भी अगर पूछ लिया तो शायद हम जो कर रहे हैं वो सफल हो जाए। Yeah. Very true, very true, very true. I that will be a great thing for me. I mean, if they could do that, nothing like it. जब हम हैबिट्स की बात करते हैं, वो ऐसा बोला था कि हैबिट कैन मेक यू एंड कैन ब्रेक यू। Hmm. ऐसी कौन सी एवरीडे हैबिट होनी चाहिए जो वुमेन्स को अडेप्ट करनी चाहिए फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? Mm, adapting for entrepreneurship, I think they should have a great sense of the ability to see. Women by nature have a great ability to adapt, but if they are in the entrepreneurial setup, I think um, learning and upgrading, staying connected because of these reels and so many distractions that are out there. I think staying connected could be one, is what I can think of at the top of my mind. But yeah, I'll have to give it a thought to figure out a better answer to do justice to the question. The question was nice, but I'll have to do justice to it. Yeah. डेफिनेटली। इसी चीज़ को लेके नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि वुमन एम्पावरमेंट को लेके ऐसी कौन सी बैटल है जो आज भी जीती नहीं जा रही है, आज भी फेस की जा रही है? Oh, today also people want the wife or the girl, the lady of the house, to come back and manage the house. So you're still judged. You're still microscopically monitored. कि भाई भले ही तुम 10 बजे या 11 बजे आओ, लेकिन you know I'm not saying this is not coming from me as an example. One of our core value is speaking from meaningful experience. So I won't say this is my personal experience, but I've seen this. I mean, I've had so many people who are there in my office, and I know that somebody is going through an abusive marriage, somebody is going through a relationship with the in-laws which are so bad, and then there are children who see the same thing and they try and emulate that. So each one girl in my company, each one lady in my company are doing too many things. She has to take care of the targets of the company that the company is giving her, because her salary comes from there. She knows that every month she's going to be reviewed, but she also has to go back home at the end of the day, keep that cheerful front, and handle all the shit that has probably happened at the home place. और या बाई नहीं आई, या फिर कुछ और तू मैं हो गया, या there are so many things that happen, and she's not in a position to give that to somebody else, क्योंकि at the end of the day she knows that that is my only job. So today also, even though when we talk about a liberalized India and we say that India is going through a very progressive phase, and we are the top 4, Right. and there are so many things of progress that is happening in the country. Women are still to an extent evaluated and judged on this aspect, कि भाई घर में आके did she do justice to the fact that जैसे कुछ देर पहले आपने बोला था, विजय रश्मि आपने नाम लिया था, देन आपने श्वेतली नाम लिया था। 100 में से ऐसे 2 लोग एग्जाम्पल बनते हैं। हाँ, 98% लड़की आज भी एक स्ट्रगल के साथ जी रही है। उनको आप क्या बोलना चाहोगे? No, see, why did these two and many of them, why did they become great success stories for us? Is because it's not that we made them and we take credit, or we want to take credit for what we have done to them. I feel they have burnt the midnight oil more. They have gone through the grind, and they were willing to go through the grind, and they were willing to be sculpted and chiseled. We हम लोगों ने ठोका बराबर, but they also surrendered to that great vision that we have at Smart.
So when they see when they see the entrepreneur who is so passionate, and they see that he's so hardworking and he has good in his heart, the manner in which he may do it may be tough. The manner in which he may do it will be absolutely unreasonable to the core. There is no logic, you know. But such entrepreneurs are the entrepreneurs whose vision inspires the others, and I think it inspired them. Now, along with them, there were others also. Why did they not grow in the manner that Vijaya grew, Amol grew, Shwetali grew, we had Dipali, we had Bernadette, we had so many Rajlakshmi Nair, we had so many ladies. I mean, I lose count of the hundreds, and I do think we must have made many entrepreneurs. But why did the rest not become like that? Is I think they did not surrender to that vision that we had, because we are a tough company to survive with. I mean, you ask all of them, they will say that the chairman on the stage creates the wow factor, and to work with him, you have to really prove yourself, because excellence is the top standard for him. You cannot be half excellent, or you cannot be हाँ मैं करती हूँ, मैं मेरा गलती हो गया अभी मैं सुधार रही हूँ. You have to be like really perfect. So to reach that standard, it takes a tall order. They surrendered. They worked hard. They really went through a very tough phase. They wanted to give up so many times, but they still held on. They held on. They believed in the company. They believed in that vision, and they made. I mean, we will not take credit for that. Definitely not. They really worked hard. But I feel all credit goes to smart Mr. Nair, because आज के जनरेशन में मैम होता ये है ना, कोई अगर आपको बोले कि सुबह 6 बजे आपको उठना है, नहीं होता है. कोई अगर आपको बोले कि आपको इतना स्टडी करके आना है, नहीं होता है. कोई अगर आपको बोलता है कि आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आपको ऑफिस पहुंचना है, नहीं होता है. कंफर्टनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन कंफर्टनेस छोड़ना नहीं है. They want the fruits of success. They want that position, the next position. They want to know that how much will the pay packets increase by, but they may not be willing to go through that grind. And as a company, we have been very tough. That's one of the reasons why for us that churn keeps on happening. सब लोग आके एक्सपीरियंस करके निकल जाते हैं, and बहुत सारे लोग रह जाते हैं, and they know that whatever they have made their life in Smart remains with them for a lifetime. And after that, they don't see that kind of growth or transformation in themselves, which they experience. So many people come back, and we've always accepted them with open arms, provided they have been ethical in their exit and in their existence with us. Right. So that was important for me. That's why I said integrity for me is very important. So I always try and say, अरे यार जब ये बंदा था हमारे साथ, did he do well? Did he not do any? He did not do any chori chakari. He was true to himself, true to the organization. For me, those standards are important, and also because I always held Smart as that first child. Even though I created Smart when I already had two of my daughters, and then we started Smart. But for me, Smart was always a priority number one. That the girls knew like immediately, yaar. So they would say, yaar, इसके पास जाने से अच्छा ना, let's solve our own problem. इसके पास जाएगा ना, ये 4 क्वेश्चन पूछेगी और फिर बोलेगी कि दुर्गा मेरे को फोन क्यों किया, तो forget it, हम लोग अपना ही जुगाड़ करते हैं, and they didn't trouble me. So I would still say that the generation that is there now, I mean, there are pluses and minuses. So just go with whatever is good, plus, and they remember you after they go out, from Smart, and then they say, यार यहाँ पे बहुत सीखने को मिला. They say, and we miss that. लेकिन जब भी अंदर रहते हैं, यार कितना सीखने को है यार, मतलब इतना सीखने को यार, थक जाते हैं. हम लोगों ने इतना बड़ा स्कूल कॉलेज में नहीं किया,
मतलब सरकास्टिकली बाहर बोला जाता है कि ऐसी एक कंपनी जो पढ़ने का पैसा दे रही है, हाँ, सैलरी भी देते हैं, पढ़ाते भी पढ़ाते हैं। भी है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगले 25 साल का फ्यूचर आप क्या देखते हो? Oh, I think women are going to be there in the forefront. I mean, they are in the forefront even now, but I think they are going to be heading key positions. See, I have seen people, and I follow people like Sudha Murthy, definitely, I said. I follow people like Michelle Obama. I mean, she's somebody who's really carved a niche for herself. And they are doing great. And I think in all key positions, all the corporate world, government institutions, key positions will be. See, today we are at a position where we are saying even the international companies, multinational companies, में CEOs Indian ही है, even abroad, you know. But we will have women at the forefront, and I'm so confident of that because they're really growing. If I give a task to a woman or a girl to do it, and I give it to a guy to do it, the girl will do it in a better form and faster. Not that guys will not, प्लीज. and not that guys will not, but see, that's been my personal experience in the 25 years. I mean, Smart has completed 25 years Yeah, this yeah, year. yeah. And that journey, you know how it's been, like this, like this, like this, and we've stood, held on and together tried to hold it together. But I've still seen, girls. I mean, give me a choice. And in my company, it's known. Yeah, I'm biased towards girls. I love them more. यू नो एक सवाल जो पूरी दुनिया जानना चाहती है, अब तक जिनके नाम का जिक्र नहीं हुआ, मतलब जब ये सुनेंगे तो चार गालियां पड़ने वाली, भाई शुरुआत मेरे नाम से क्यों नहीं क्यों हुई? नहीं किया? मेरा तो जिक्र ही नहीं किया यार, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कुछ मैं हुई कोई नहीं। हूं कि नहीं? संतोष नायर के साथ स्मार्ट का को फाउंडर बनना कितना इजी था आपके लिए? My God, it was the most toughest. But it was not something that, he मतलब मेरे पे थोपा गया कि भाई चल, ऐसा नहीं था. Um, I clearly remember the day that, he called me and I was working. I have 11 years of working experience in the topmost shipping company of India. And I was working when he called me up in the afternoon at some 12:30, 1 o'clock or something. And he said, I have left my job and I have decided to start something of my own. And I said, great. I said, brilliant. I said, all the best. And I knew because I mean, we were already married 8-9 years by then, 8+ years by then. So I knew how he is, how he conducts himself, how does he prepare himself, what is the kind of hard work that he puts into anything. So I know that ये बंदा जो भी करेगा ना, आगे जाएगा बहुत. And then I went back and I sat with him home, and he told me, no, I want to start this training organization. And I want to build this up, और ये मेरा vision है. I want to transform people. And I knew he could do it. So I said, yaar, if his approach is going to be out there, somebody has to be there inside to, to manage. And at that time, because I did not know whether वो capability मेरे में है, मैं कर पाऊंगी, क्या ये सही है, मैं तो ऑफिस में काम करती हूँ, वो छोड़ के ये करूँ कि साथ में करूँ, I don't know. And Santosh as a person is somebody whose standards are exceptionally high, and he wants the best, and he will not take no for an answer, unreasonable to the core, you know. तो and it's not that तुमको खुश करने के लिए वो हाँ बोलेगा. इट इज लाइक पॉसिबल ही सही नहीं है तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, आंखों में देखा तो भाई देन यू डोंट वांट टू लुक एट दैट आईज, यू नो. सो दैट हैज बीन अ स्टैंडर्ड. सो आई सेड यार, इफ ही इज गोइंग टू बी लाइक दिस, somebody will have to hold, you know. So it was difficult. I mean, he's mellowed down a lot. बेचारे को इतना नहीं बुरा रहा. He's mellowed down a lot. His vision was so inspiring, Vikas. That just kept me on, you know.
So my job was mainly to facilitate him. My job, I didn't even know whether there is a there, matlab he was there, he was the face, he was doing everything outside, and I just said that okay, I will support you. Whether I had it in me, I didn't know, but I just continued to do it. इतने डिमांडिंग एक्सलेंस वाले बंदे के साथ इतने साल निकालना डेफिनेटली इजी टास्क नहीं है, और Not जहाँ पे very आप hard. वाइफ भी हो, आप को फाउंडर भी हो, कैसे बैलेंस करते हो? Oh God, we used to have boardroom fights in bedrooms. So just we wouldn't talk for days sometimes, you know. Um, so I don't know. Sometimes I used to get into this feeling that I'm not good at it. मेरे से नहीं होगा ये. Many instances where I felt that yeah, I'm not the right person. I'm not the right person. Um, but yeah, it is, he's tough, he's demanding, he will tell you, he will give you instances, he will empower you, he will give you a lot of confidence, he will give you a lot of guidance, but it is either his way or the highway. So you have to choose. Okay, I might as well do it his way, and then once you know how to handle him, you know how कि यार वो गुस्से में है, अभी नहीं सुनेगा, let's discuss this and bring this up another time. But he is a very good listener. That's one. That's one attribute I think a person should have. Be a very good listener, not only to what is spoken, to the unspoken also. So there are unspoken conversations. See, I may be telling you something, but there may be a lot of things that I may not be telling you. The ability to listen to that is something, I think I was intuitive enough to gauge that and get that and understand what people said. So that was a skill that I had inherent in me, is what many people tell me. My intuitive skills are good, is what I'm told. But he would listen to people, and I think as entrepreneurs we should be great listeners. That really calls for success. But yeah, surviving with Santosh, extremely tough, difficult, challenging to wear all the hats and do justice to all. But what I understood is that he has a great ability to do XYZ. Let him just focus on that XYZ, and let that ego not come in. So you have to be very egoless. See, generally what happens between, if the husband and the wife are managing or are running a show, there are many instances that ego may come, the ego clash may come. I think for one person it's always better not to have that ego. So I was very happy doing that role. I love that because that's me. And his job was to be outside, so I pushed him out there. Because I know यार बंदा ऑफिस में आएगा ना, इधर तहस नहस हो जाएगा, बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाएंगे, और फिर I have to then again redo everything and do all the things that got undone. So managing that was very difficult. Managing him was equally difficult. And many a times, he's been a father, but wanted to be the father, but could not be the father to the kids because he had his demands. He had his level of perfection that he wanted, and he wants things to be perfect. वो उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से if he found that it's not perfect, we didn't do the right way, and his way is always the long way. आज की दुनिया में हम लोग सब शॉर्टकट्स करना चाहते हैं ना, कि यार ये शॉर्टकट कर लो, जुगाड़ कर लो, हो जाएगा. नहीं, he would want to do the sahi way and the long way, and then to get everybody to accept to that way, because I was that mediator. भाई तेरे को क्या चाहिए संतोष? अच्छा ठीक है, now then go back and then try and tell them, this is what we intend to do, and this is how we intend to do it. Let's do it this way. And there will be so many people who will have their own views, their own resistance to doing it. Then to go back and tell them, okay. So I think I managed it. I survived. I would say I survived. You told me that in the beginning that I've been the force behind him. I don't think so. I really don't think so.
because one of the most strongest force for him to be what he is his mother. And I think that we should give as a credit because she's the first. डेफिनेटली वो तो है ही, बट सर बहुत बार स्टेज पे एक किस्सा आपके लाइफ का सुनाते हैं, विच इज़ ट्रू, क्योंकि हमने देखा है वो चीज़ को, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग के लिए निकलना था. यू And I had that accident. Yeah. एंड ही सेड कि किरण ये पैसा ये चाबी, मैं निकल रहा हूँ. Yeah, and he left. यस. Yeah. So, यही रीजन था. मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जिसको अगर हम स्टडी करें तो ये बोलना बहुत जरूरी है. अगर संतोष नायर बने बिकॉज पीछे सिंधु नायर खड़ी थी. क्योंकि आजकल के आज की जो लड़कियां हैं उनको पैम्परिंग बहुत ज्यादा चाहिए. Yeah. बहुत He ज्यादा was चाहिए. not there for any of my deliveries. He was not there for my accident. But I just took it in my stride. I mean, I knew that he's there out doing a bigger thing. See, he has lot of potential. Okay, he has the power and he's God gifted. I always tell him, यार भगवान ने तुमको ना सही सुस्त टाइम में फुर्सत से बनाया, फुर ऐसा कूट के तुम्हारे अंदर ही डाला है. So I know that he has the power to influence, inspire, and make people believe that they have it in them. So why will I get him into यार तुम डिलीवरी में नहीं आए, यार तुम इधर नहीं आए, तुम उधर नहीं. You manage that, I'll manage this. ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे से अपन बात कर रहे हैं और ये डिस्कशन कहीं पे रुकना चाहिए, बिकॉज अगर आज रुके तो कल किसी और को सुनने का मौका मिलेगा. जो चीज़ से मैंने शुरुआत की थी पूछने के लिए, कि जैसे अभी भी बोला मैंने, संतोष नायर बने बिकॉज पीछे सिंधु नायर खड़ी थी. और वही अगेन चीज़ है कि आजकल की लड़कियां हर चीज़ में डिमांड कर रही है. हर चीज़ में उनको पैम्परिंग लगता है. और यही सारी आपकी और सर की ये वाली बातें मुझे उन तक पहुंचाना जरूरी लगा. एक सवाल जो अभी भी मन में है, कैसे मैनेज किया? बिकॉज सामने सबके सामने आंखें नम ना होने देना, लेकिन अंदर खुद से बहुत बार लड़ना, कैसे मैनेज किया? Two things I will say. I had a great support system, Vikas. I had a great support system. I was blessed to have great in-laws, which is my mother-in-law, my sisters-in-law, my sister. See, luckily they are all women. And they were my great support system, one. But by personality, I'm somebody who stays cheerful and who does not like to bring that emotional side in front of me unless I am with people very close to me. Then I will, unwind, and then I will, relax. But for the world, I want that exterior cheerfulness कि यार भाई ये ना हमेशा हंसती रहती है, हंसमुख है. Like when my daughter was getting married, the boy's grandmother said, अरे तू बहुत पसंद है मुझे, तू बहुत हंसमुख है. Many of my friends have said that, and I must be going through some of my worst days. I don't know, I think it's God's gift, but I have managed to stay cheerful. And cheerfulness for me was that sanity. To not allow that expression to come, I think I learned it, I'll tell you, I think I learned it because when I managed Smart and when I managed my house, there were a lot of ups and downs. And I largely took it upon myself or battled it at my level. Very rarely would I take it up with Santosh because I know that he's the performer. So that really gave me that ability to be tough and strong at the same time. So that built that resilience in me. And that resilience ki nahi, I can do it and I will not, allow this thing to dampen the spirit of
the performer, or dampen the spirit of, like, if there is a bad day in office, I will not come home and throw it at the kids or with my mom-in-law or my in-laws. I would still keep it to myself. So there are times when there are a lot of things bottled up, and I think women of the current generation should, um, like I said, should have somebody to share it with. It's a companion or whatever, and also be that ट्रू अर्धांगिनी जो बोलते हैं ना, हस्बैंड को हर चीज़ में सपोर्ट करे और साथ में लेके चले, ना कि ये सोचे कि यार मैं और मेरा वो जो ईगो, that I think I was egoless. I don't know. I don't come with that ego. Maybe my upbringing, my dad. लोगों ने नायर साहब को जिस तरह जाना है और आप जिस तरह उनको देखते हो, वो दोनों पर्सपेक्टिव मैं तो चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस तक पहुँचे. लास्ट करके 2-3 सवाल और पूछ रहा हूँ मैं आपको एक्चुअली. It's never ending. I can write a book on Santosh. या आई नो. कितने भी डिफिकल्ट टाइम आपके लाइफ में आए, आपने हमेशा वो टाइगर को रोर करने के लिए वो जंगल में खुला छोड़ दिया था. एक इंसिडेंट था जहाँ पे आई रिमेम्बर घर में एक डेथ हुई थी. एडवांस गुरुकुल का सेशन चल रहा था. And my mom expired. एंड संतोष तो मुझे मेरे साथ में चाहिए. Yeah. इतनी सारी चीजें आपने फेस करी, वो एक मोमेंट क्योंकि संतोष बाजू में चाहिए. I see, for me, I had a very different equation with my mom, not somebody, I mean, she was largely responsible for the fact that I don't want to be like her, and I want to be far more, far more different is what made me today. But I never thought that उसका वो एक death से मैं इतनी हिल जाऊंगी, लेकिन मैं actually हिल गई थी वो दिन, because I and she slept together. I never sleep with her. I slept together, and morning when I got up, she was not moving at all. So for me, that shock was too much to take in. And I would have accompanied him for the session, but I didn't go. I said, नहीं, उनका तबीयत last night ठीक नहीं था, तो आप जाइए, मैं घर पे रहूँगी. And then I said, nahi, I cannot. Then when I got to know she expired in the morning at around 9 o'clock, I said the session starts at 8. Break hota hai around 11. So I'll still wait, I'll still tell him, let him. I didn't want him to come home and, break the session, because I know for him that is very important. कि वो अपना जो obligation है customers को लेके, वो उनका तो सबसे टॉप में रहता है. So I didn't want him to cut short that obligation and dilute it. But I don't know, because I became so difficult to manage myself, and I said that, no, I want him here, which I didn't demand when, I married. I mean, when I had kids in the hospital, he was not there when I had my operation. But I just couldn't face the fact that, oh, she's gone. I mean, she was with me last night. She's just gone. How can that be? And absolutely unexpected, So I couldn't hold myself. And I said that, no, I want him there. And the person that he is, like you said, no, he's somebody who people know him at that. And he's very different, otherwise. He loves to spend time. He loves to watch. He loves to watch movies. First day, first show wala banda hai. He loves movies. He takes lots of inspiration. So that's a different side of him. He loves to socialize with friends. He loves to host parties. He loves that. That's a different side of him that people may know, may not know. Yeah, Smartisans of course will know it, but not everybody know it that way. But for him, it's like when it's work, it's work. When it's play, it is full play. ऐसी कोई बात जो आज तक उनके साथ करनी है आपको, आप कर नहीं पाए? Oh, so many. I've lost count of it. आज ये प्लेटफॉर्म पे आपके मतलब उनके साथ और उनके साथ साथ पूरी दुनिया के साथ क्या शेयर करना चाहोगे जो आपने संतोष से अभी तक बात नहीं की?
No, I would have spoken about something which are my inner feelings and all. But yeah, when it comes to him, which I want to share to the world, not everything I want to share to the world. I want to keep some secrets. I want to keep some secrets with me. But he has. See, he. I want him to really fly high. You know, I know that he has a dream to someday be the peacemaker between countries. उनका वो dream है. He's written that in his book. So I want to see him there. I want him to really fly that high and do that. Be the pacemaker between companies, be countries, be there and do एक स्टेडियम में एक शो या एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे ये तो हमारा भी सपना है कि हम उनको कवर करें. yeah. So I want him to be there. I don't want him to take care of all the other things because he's meant for big things, and he has to do that big things. हम तो चला लेंगे बाकी का काम. That's why I said आप हो बोल के स्टेज पे परफॉर्मेंस द बेस्ट होता है हमेशा. Yeah. We are like the yin and yang, we are complete opposites. हमारा शादी टेलर मेड है, but we are complete opposites. He loves to be on stage. I don't want to be anywhere there. I don't show me the camera, nothing. But he loves to be there. Yeah. I want to be there on the stage, and I think I want him to be working till that last moment of breath, on stage. That's where he is. Actually, I'm speechless. With this, हम अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं अभी, और नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में हमने जो आज तक नहीं किया वो करने जा रहे हैं. देयर विल बी अ रैपिड फायर राउंड जहाँ पे 4 सवाल पूछे जाएंगे. Oh my God, I'm poor at rapid fire. मेरे को तो क्वेश्चन समझने में 2 मिनट लगता है. बहुत सिंपल है, और उससे हम एंड करेंगे इसको. द आइडियल पर्सन इन योर लाइफ. My mother-in-law. सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज मुझे unorganized people and spaces. ओके. आपको अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर अगर बनाया जाता है, हाँ, क्या बदलना चाहोगे? I would make it compulsory for every day to have, 1 day off from their work or 1 day off from their schools and work in villages or work with aged homes and give your personal time there, not money. ओके. इतनी साल की जर्नी में जब आप पास्ट को देखते हो, ऐसी कौन सी चीज जो आपको लगता है कि आपसे गलत हुई हो, आपको बदलनी है, आपको करेक्ट करनी है? I think I could have done better in Smart. I feel I didn't do justice to the position that I had. And I had already given up the position of a managing director in 2010 because I said I'm sitting on the wrong chair, and it should be given to somebody who's far more deserving as a candidate, and I should not block that seat. So I had resigned as a managing director. I remember writing that letter to Santosh, and I said, I'm not doing what I am supposed to do, and I feel I could have done more. I had the ability. I could have done more. I still feel that. नवरात्रि स्पेशल के ये फर्स्ट एपिसोड में जिस तरह आपसे बातें हुई, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि इतने दिल खोल के आपसे बात कर पाया. आपसे जो बातें मुझे मेरे दर्शकों तक पहुंचनी थी वो शायद पहुंचने में कामयाब हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है. और आज से मतलब आपसे शुरू हुआ ये सीरीज, अगले पड़ाव में किसी और फील्ड के लोग आके बात करेंगे. बिल्कुल. कोई पीपल मैनेजमेंट लेके बात करेगा, कोई मेडिकल फील्ड से होगा, कोई सोशल एक्टिविस्ट होगा. इन सबको लेके ऐसे सारे सब फील्ड में काम करने वाली औरतों को बन के मतलब उनका सबका मिला के मेरे ख्याल से सोसाइटी बनता है. एंड आई फील औरत ही है जो सोसाइटी को शेप देती है. आई एम सो ग्लैड कि ऐसे सारे औरतों के बीच में मैं रहा हूँ, जहाँ पे मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी वाइफ हो.
you know Your daughter also. my daughter and last but not the least my अम्मा, मैं आपको हमेशा अम्मा करके ही बुलाता हूँ Yes. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपसे पिछले 15 साल में सीखते आ रहा हूँ. कहीं पे भी अगर नर्वस हूँ, मोटिवेशन चाहिए संतोष नायर है, इमोशनल डाउन हूँ सिद्धू नायर चाहिए. और यही सारी चीज़ें हमारे दर्शकों तक लेके जाने के लिए हमने ये प्रयास किया. आई होप उनको ये बातें पसंद आए. आपको अगर सिद्धू नायर जी के बारे में और कुछ भी जानना हो, लाइफ को देखने का नज़रिया अगर बदलना हो, डेफिनेटली कमेंट करें. आपके सारे क्वेश्चंस हम उनकी तरफ पहुंचाएंगे और आशा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम मैम फिर एक बार पिक्टोग्राम चावड़ी के Anytime, प्लेटफॉर्म Vikas. पे आए. Because you're very special to us, to Smart, okay, to Santosh, to me, both of us. Because तुम Smart को छू के निकले हो. तुम्हारा वो माइंडसेट जो बन गया है ना, वो हम जब देखते हैं अभी, बहुत खुश होती है. और मुझे वो सभी लोगों को देख के खुश होती है जो आगे जाके कुछ बने हो. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट यार वो स्मार्ट से गया है. And I'm very happy with the work that you're doing, the reach that you're trying to, build, the एक issues, matters, experts जो तुम लाते हो तुम्हारे field में. Hats off. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much. Thank you so much. And सभी प्रेक्षकों से did I say something wrong? ना. सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार. थैंक यू.